Hello, my dear educators. This is Meenakshi Narula, and I welcome all of you to Mentoring the Mentors, a channel that is just working for empowering educators and elevating education. So, my dear educators, as we have been talking about Parlay Genie, so in this video, we're going to talk about second part of Parlay Genie. Like once we already generated the questions, the HOTS, the higher order thinking skill questions, the prompts, either from the topic or by sharing a URL of any video, right? So my dear educators, as various grade levels have been mentioned from grade 5 to 6, 7 to 8, 9 to 10, 11, 12 and higher. So accordingly, you'll be generating that. So now what next? What next we can do? If you click after generating these questions, if you click on start discussion, then you will land on another page. Like I have already done one. Like I have generated a few questions based on my video by sharing the URL on International Day of Yoga. So here are the three questions that they are there, right? So here they are peer feedback instructions as well. So my dear educators, if you check here, if I go ahead with the settings, now in setting, there are a number of options that you can change and do it accordingly. For example, peer feedback questions. Till now, we have been noticing these three questions. If you want to change, you can change these questions also. There are 10 questions that are given by default. Also, you are free to add the questions on your own. Yes, my lovely educators, 10 क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए हैं, 3 इसमें से सिलेक्ट है. अगर आप इसके अलावा कोई और ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं या अपना बनाया हुआ क्वेश्चन इसमें फीड करना चाहते हैं, यू कैन गो अहेड विद दैट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड करना चाहती हूँ, लाइक इफ आई से गिव फीडबैक बेस्ड ऑन 2 stars and which strategy to your at least one peer at least, right? So here you go, right? So I have added this question. So now this is how you will be able to add more questions. Now I'm selecting this question, and if I would like to suppose remove this one, how did this post change your mind about the issue? Okay, and I want to remove this, right? So this is how we can have our own question. So this is a kind of roundtable discussion. Here is one option. Let's see, require submission. We want the students, they must submit a unique response before they can see comment on their classmates ideas. दूसरों के ideas को पढ़ने से पहले उनको अपना कोई response, उनको comment देना पड़ेगा. And anonymity has been maintained. देखिए यहाँ पर टिक किया हुआ है, तो किसी बच्चे का नाम सामने highlight नहीं हो रहा है. ये आपकी मर्जी है, आप नाम ऐड करवाना चाहते हैं या anonymously आप उसमें participate करवाना चाहते हैं. At present it is selected like anonymity will be maintained. You want to select the closing date कि ये कब तक चले डिस्कशन, 2 दिन तक, 4 दिन तक डिस्कस कर सकते हैं, कब तक अपने आइडियाज इसमें शेयर कर सकते हैं, राइट? इसमें ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, इसका असेसमेंट कैसे होगा, मैक्सिमम स्कोर कितने होंगे और असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा. लाइक यू वांट टू गो अहेड विद कि क्रिएटिव पार्टिसिपेट किया है या एनालिसिस किया है या एविडेंस दिया है या फोकस है, तो उसके अकॉर्डिंगली सी दीज आर द रूब्रिक्स. यू कैन सिलेक्ट दैट एंड यू कैन ऐड योर ओन क्राइटेरिया एंड द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो फॉर दैट, राइट? जैसे आपको पता है कि हर एक क्राइटेरिया के लिए अलग अलग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन ऐड योर ओन criteria and the description as well. Okay, तो ये हो गया all about the setting. If I talk about discussion, see, I have clicked on this pink button, invite students. When I click over here, either you can share the code with your students or you can share the same as a link in any of the WhatsApp group or through email, or जैसा भी आप share करना चाहते हैं, right? And or you want to connect the same with your LMS, Google Classroom, Schoology, Canvas, ब्राइट स्पेस और माइक्रोसॉफ्ट टीम. तो मैं इसको यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया अपना शेयर एज अ लिंक, एंड आफ्टर दैट आई हैव शेयर्ड द सेम थ्रू व्हाट्सएप. नाउ थ्रू अदर ईमेल आईडी आई हैव लॉग्ड इन
and the name that has been mentioned here, it is Gloria, right? That is to maintain the anonymity of a particular individual who is participating. So मैंने just ऐसे ही I have written the word fitness, right? Suppose I have just written like that. So if I go ahead with the prompt, right, I want to participate, so I even can edit my response also. Look here, if I am editing, I have now mentioned, I have edited through my mobile. Now if I just check here and I go to discussion, it will take some time to reflect, right? So if I talk about summary, you want to check individual responses, right? Gloria, like you can view the response, what response has been given, and accordingly the teacher can give the feedback. आप सबके responses पढ़ सकते हो as teacher, and you can give the feedback based on these points, right? यहाँ पर मेरे पास अगर आएगा कि मैंने कितनी फीडबैक दी है, क्या किया है, उसके अकॉर्डिंगली एंड एज अ टीचर यू विल बी एबल टू असेस, राइट? आप उसको असेस कर सकते हैं, राइट? समरी आपके पास आ गया है, और समरी में आपके पास क्या है, कीवर्ड्स जो हम लिखते हैं उसका एक क्लाउड बनकर आ जाता है. यू वांट टू एडिट द वर्ड्स, कि किसी ने एक ऐसा वर्ड लिखा है, मे बी यू वांट टू डिलीट इट, दैट इज नॉट गुड. लाइक ऐसे भी कुछ वर्ड्स होते हैं कि हम उसको लिखते हैं कि स्ट्रिक्टली शुड बी अकॉर्डिंग टू whatever the instructions have been given. आप उसको चेंज करना चाहते हैं, आप उसको हटाना चाहते हैं, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, राइट? तो इसके थ्रू आप बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करा सकते हैं. आई गेस यू हैव ऑल यूज दिस Parlay Genie during online platform, especially for discussions like that we have during our language classes or maybe social sciences classes, English, sciences also you can have in any of the subject. You can go ahead with such kinds of discussions, right? तो ये आपकी होगी कुछ एक settings. आप इस तरीके से ऑनलाइन डिस्कशंस करवा सकते हैं. तो आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस प्रॉम्प्ट, कि प्रॉम्प्ट हमारे कौन से जनरेट हुए हैं, और ये हमारा उसके अकॉर्डिंगली पीयर फीडबैक इंस्ट्रक्शंस को हम चेंज कर सकते हैं. एंड सेटिंग्स, वी हैव गॉट नंबर ऑफ ऑप्शंस, पीयर फीडबैक क्वेश्चंस भी चेंज कर सकते हैं. वी कैन गो हेड विद द असेसमेंट क्राइटेरिया टू, कितने आप मैक्सिमम स्कोर देना चाहते हैं. एंड देन डिस्कशन यू कैन व्यू फ्रॉम हियर, एंड देन हियर इज द समरी. सो टीचर विल बी एबल टू रिव्यू, असेस द स्टूडेंट पार्टिसिपेशन. लाइक अगर आपने हॉलीडेज होमवर्क में बच्चों को ये असाइनमेंट दिया है कि 1st से 15 तक, या आज 16th है, सपोज यू आर गोना टॉक अबाउट कि टिल योगा डे बिगिंस वी गोना टॉक अबाउट दीज पॉइंट्स, राइट? हम योगा डे 21 जून तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से इसकी जो क्लोज डेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर क्लोज डेट अगर मैंने लिखा है, तो आई विल बी एबल टू सिलेक्ट कि 21 जून तक ये चलेगा, और दैट विल बी द क्लोज डेट, राइट? हार्ड क्लोज मींस डिसेबल द कंट्रीब्यूशन आफ्टर क्लोज डेट, उसके बाद आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, राइट? तो आप क्या करेंगे, इसके बाद नहीं पार्टिसिपेट कर सकते तो स्टूडेंट्स दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट, इसमें अपने व्यूज दे सकते हैं, अपने विचार इसमें ऐड कर सकते हैं, और आप उसको उसके बाद असेस कर सकते हैं. स्टूडेंट्स का असेसमेंट, या योगा डे वाले दिन आपको रिजल्ट डिक्लेयर करना है, देन चेंज द डेट एंड मेक इट टिल 20th दे कैन पार्टिसिपेट, एंड आप 21st को ऑन द डे ऑफ योगा यू कैन असेस द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर पार्टिसिपेशन. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस टूल. लाइक पहले हम इतना ही टूल यूज करते थे कि हम डिस्कशन के लिए प्रॉम्प्ट्स देते थे. नाउ हम प्रॉम्प्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं, और उसको इसके साथ लिंक करके जो है डिस्कशन भी स्टार्ट कर सकते हैं. सो दिस इज लाइक दैट. तो अगर हम बात करते हैं रिसेंट राउंड टेबल, अगर आपने कौन कौन सी राउंड टेबल डिस्कशंस कंडक्ट की हैं, माय फर्स्ट कोर्स ये आ गया, और इसके अलावा आपके पास कुछ और राउंड टेबल जो अवेलेबल हैं डेमो की, आप वो भी उसमें देख सकते हैं कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया. यू विल बी एबल टू चेक. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट अ न्यू राउंड टेबल फ्रॉम हियर, राइट? जब हम न्यू राउंड टेबल पर क्लिक करते हैं, राइट, सो उसमें आप इसको नेम देंगे, लाइक आप कौन सा करना चाहते हैं, राइट? वो दैट यू कैन ऑल्सो बिगिन विद दैट, राइट? तो उसके बाद जब हम क्लिक करते हैं माई कोर्सेस, ये आपके कोर्सेज हैं, डेमो है, ये माई फर्स्ट कोर्स है. आप नया कोर्स भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, राइट? यू कैन क्रिएट अ न्यू कोर्स. आप कहाँ पर करना चाहते हैं, क्रिएट न्यू कोर्स करना चाहते हैं, कोर्स का टाइटल क्या है, अदर टीचर्स को पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं, स्कोर टीचर्स दूसरे सेक्शन के टीचर को पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें उनको लिंक कर सकते हैं. अगर मैं बात करती हूँ, इफ आई टॉक अबाउट माई पोर्टफोलियो,
It's taking some time. So मैंने कितनी राउंड टेबल्स करी हैं, टॉपिक्स कौन से चूज किए हैं, बुक मार्क किया है, फॉलोअर्स क्या है, सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर आ जाती है हमारी, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सपोर्ट एंड पीडी, आप इसमें देयर आर नंबर ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेशंस ऑल्सो। आप सेशन बुक करना चाहते हैं वर्चुअल पीडी सेशन, यू कैन गो हेड विद दैट, राइट। और उसके अलावा यूट्यूब पर जाके चेक करना चाहते हैं, और मे बी यू वांट योरसेल्फ टू बी सर्टिफाइड एज पार्ले सर्टिफाइड एजुकेटर, देन क्लिक हियर गेट सर्टिफाइड। See, here it is your email ID, first your grade level, okay, your Twitter handle, और उसके बाद में आपको इस तरीके से अपना स्क्रीनशॉट भेजना है, राइट, कि अटैच फाइल करनी है कि आपने राउंड टेबल जो कंडक्ट किया है। जैसे हमने ये देखा कि किस तरीके से वर्ड क्लाउड बन जाता है, रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, कमेंट की लेंथ क्या है, राइट। तो इसमें ऑल इंस्ट्रक्शंस दे हैव बीन गिवन कि you have got a written round table with your students and the parameters of the round table are like this. It has been mentioned, and then take a screenshot, okay, and then run a verbal round table. आपने written round table किया जिसमें comments डाले, उसके बाद you have gone ahead with the verbal round table, and then you will be attaching this, right? Or this is how when you will be submitting, and then you will be certified as Parlay certified educator as well. So my dear educators, this is like a platform where you can get yourself certified and use it for your students, and this will be saving your time too, right? So if in case you have got any notifications and you want to upgrade your account, right, you have got a free teacher account, you want to go ahead with that, or you want to buy it, like suppose there are limited number of roundtables that you can go ahead in the free version. If you want to buy it, you can buy it also, otherwise you can use the free version too, right? Check the membership and pricing, that's really up to you. I am not here to promote any kind of software. It is just like how we can use this software to make our classes engaging, enriching, and exciting. So my dear educators, do use this software, Parlay Genie. At least you will be able to generate questions from the videos. Stay tuned to Mentoring the Mentors. Keep on watching. Do share the same in your community as well. And do not forget to share your valuable comments in the comment section below. Thank you. Stay happy. Stay blessed. Have a nice day.